Yes. No. Why am I not on the screen? Yes. So, first few comments on UPSC prelims. I'll just give you because we have to take a session tomorrow. So, a lot of you have asked what is your view on the paper yesterday. I would say that students who have studied throughout the year, seriously, for them, the paper was slightly unfair because it kind of creates a level playing field for a candidate who has not studied or covered the syllabus that much in detail. Okay. So I would say the paper was relatively easy for certain sections. Polity was very easy. Economics was very, very easy for some reason. Environment was also comparatively easy. I think polity, economy, polity and environment, I'm sure most of you have pinpointed, done those questions in class. तो वो एक अच्छी बात थी हमारे लिए. See, regarding fringe questions कि ये वाला part आ गया, वो वाला part आ गया. See, that is the story every time. Yes, they introduced a new pattern, but that pattern used to come in a form even before. पहले भी ये वाला form आता था. Only thing is that slightly made it more difficult. वरना ये pattern आता था. If you remember, match the following आता था A, B, C, D करने के लिए, and then they used to ask which of the pair is correctly matched. That used to be one question that used to come earlier, है ना? थोड़ा सा उसको और difficult कर दिया इन्होंने, and they said only one pair is correct, only two pair is correct. So the trick in this question was, अगर आपको दो eliminate हो गए तो risk लीजिए. If you are able to eliminate only one or you know only one, then do not attempt this question. I think many questions were where you could not eliminate more than one, तो छोड़ देना था ऐसे question. No worries. Okay. Anyways, see, जले का फूका क्या बोलते हैं? जले क्या? हाँ, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना? यूपी में मुहावरे भी आते हैं. So you should get well versed with it, especially आपके मेंस के पेपर में 150 नंबर की हिंदी आती है, and you have to write sentences. एक सेकेंड बस. हाँ हाँ सर. हाँ हाँ सेशन में 10:30. ठीक है 10:30 के बाद. तो UPPCS में please do not restrict your guesswork, your choices, because there you will be rewarded. Number one, है ना? Yes, this is better. So I am visible to all of you, right? Yes. Okay. So there, UPPCS में, I'll just tell you my experience. I've been giving simultaneously with all my UPC attempt. 2018, 19, 20, all three interviews I gave. So one thing that I found out was कि UPSC की तैयारी से UPPCS निकल जाता है. मतलब if you have prepared well for UPSC, UPPCS आप clear करेंगे, provided you do 4-5 things that I am going to discuss today. वो 5 चीजें आप नहीं करेंगे तो UPSC की तैयारी से there is a possibility कि आपका प्री ना निकले UPPCS का. If you don't do those 5 things, you may not clear. But if you do these 5 things and you have prepared for UPSC, reasonably fine, not even good preparation, UPPCS निकल जाएगा. So we'll discuss those 5 things. पहली चीज क्या है? Subject wise बात करते हैं. Number 1 is polity. Now, polity you have to revise in half a day. क्या करना है आपको polity के लिए?
जितने भी टेबल्स दिए हुए लक्ष्मीकांत में, whether it is a table for amendments, whether it is a table for articles, बस एक बार टेबल को देख जाइए, just see the tables, मतलब देख जाइए, और if possible एक पेन और पेपर लीजिए और लिखते रहिए उसको, just keep writing, जैसे ओके 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 21 साल से 18 साल कर दिया, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस विल बी रिडिकुलसली क्लोज एंड दैट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट, क्योंकि उन्होंने रटा नहीं है उस चीज को, दे आर नॉट ट्रेन्ड टू रिमेम्बर इट, दे विल थिंक, जैसे आपको क्लास में मैं कराता हूँ कि आप सोचिए तो अच्छा ठीक है राजीव गांधी यंग प्राइम मिनिस्टर, ही विल ब्रिंग इट, सो आप ईयर से देख लीजिएगा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1984, तो वैसे करिए, बट हियर इट मे बी 61st 60th 62nd, so then some of you will make mistake. Okay, तो एक बार important amendments please see all the tables, लक्ष्मीकांत के टेबल से all the questions will be solved, सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, they will try to, I am not criticizing, but like I have to work there also, so I can't even criticize. So see, बहुत दिमाग लगाएंगे तो assertion reason का क्वेश्चन देंगे, and it will be very very generic, ऐसा क्वेश्चन जो मे बी जो बना रहे थे उनको खुद नहीं पता कि वो क्या बना रहे थे क्वेश्चन में, so I am sure all of you will be able to handle the assertion reason of polity. So polity में क्या करना है, everybody please tell me what do you have to do, because इसके बाद I'll discuss all the subjects and then I'll discuss कि next 4 days में इसको plan out कैसे करना है, because we have 4 days, I'm not counting Saturday, most of you will have centers far, तो आप travel कर रहे होंगे, so you have Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 4 days. Amendments or tables? हाँ, जो भी, हाँ आर्टिकल जो भी टेबल दिया, जितने भी टेबल्स दिए हुए ना, जस्ट सी द टेबल्स. ओके, नाउ सेकंड पेपर व्हिच इज गोइंग टू फेच यू मार्क्स इज साइंस एंड टेक. कुछ भी नहीं करना है, कल लूसेंट खोलो, याद कर लो उसको, एक एक लाइन को पढ़ लो, स्टार्ट विथ बायोलॉजी, देन गो टू फिजिक्स, देन गो टू केमिस्ट्री, स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइंस लिखी होंगी उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिश्ड राइस वो खाने से कौन सी बीमारी होती है, देयर इज अ सेंटेंस रिटन इन द बुक कि पॉलिश्ड राइस खाने से आपको विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है एंड यू हैव बेरी बेरी. तो पहले पूछते थे बेचारे विटामिन बी और बेरी बेरी, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, सो नाउ दे विल आस्क this, but that is also covered in that book. 25 questions are assured, 20 to 25 from that book. I'm not promoting that book, I don't even know them, I hope I write such a book. So but then for your benefit, what can be done is please do that. Okay, Lucent start with biology, then do physics, then do chemistry. Physics maybe they have favorite area about मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा तो क्या बोलेंगे ऐसे डिवाइस को, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मोटर की क्या प्रिंसिपल है, ये एसआई यूनिट पे क्वेश्चन पूछ लेंगे. एसआई यूनिट ऐसा नहीं कि इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, वो बिहार में आता है, दैट मच ऑफ डिफिकल्टी कम्स देयर. यहाँ पर इट इज स्लाइटली सिंपलर, दे विल जस्ट आस्क कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ, लेट्स से Dobson is the SI unit, नहीं ये नहीं पूछेंगे. They'll ask what is the SI unit of, let's say, power. क्या है power का SI unit? Watt. Watt. Yeah, sorry. हाँ, ठीक है. That's okay. So, like SI unit एक हो गया फिजिक्स में सवाल. I don't think they will ask on I, they used to ask, but बिहार में I पे आएगा. I यहाँ पर brain पे question आएगा. They'll ask some or the other thing related to function of the brain. Even in Bihar they will ask. फिर blood group पे, RH factor पे, तो वो सब बायो में आप कर लेंगे. केमिस्ट्री में पॉलीमर्स पे करिएगा, पॉलीमर्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. टेट्राइथिलीन क्या होता है, और या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड व्हाट इज इट फॉर, या फिर टेफ्लॉन किस चीज से बनता है, सम और द अदर काइंड, वो पॉलीमर वाला पार्ट जरूर देख लेना. तो ये हो गया सेकंड. थर्ड सब्जेक्ट
that is going to give me good marks. सबसे आसान सवाल बताऊं आपको यूपीपीसीएस में कहां से आता है? इन्वायरमेंट से. You will be surprised by the simplicity of the question. आपको लगेगा कि यार they are joking. They will, और if you were to ask me कि 1 घंटे में करने है कुछ environment का which is going to give me marks, please do population वाला chapter NCERT से. They will ask population बढ़ता कैसे, birth rate, death rate, urbanization, migration, इसी पे question आएगा. बट वो सिर्फ NCERT के 4 चैप्टर कर लीजिए environment में. They'll ask conceptual questions, ज्यादा से ज्यादा उसके बाद pollution पे पूछेंगे, ओजोन पे, climate change, greenhouse gases पे. You will be able to handle. Other than this, you don't need to study anything for environment if you ask me. That is the 3rd subject. 4th subject, after environment, you can treat geography. Okay, now geography में those who have studied UPSC के लिए simple logics पे question आएगा, albedo पे सवाल दे देंगे. Very simple कि ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन के बीच में कुछ डिफरेंस पूछ लेंगे. वेरी सिंपल, और इट विल बी फैक्चुअल. फैक्चुअल के लिए भी मैं बताऊंगा. ज्योग्राफी के लिए यू हैव टू स्टडी लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया, फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, दोस थिंग्स दैट यू कैन सी फ्रॉम लूसेंट ट्रेन में जाते हुए. आई विल गिव यू द सीक्वेंस आल्सो कि किसको पहले करना है, क्या करना है. ज्योग्राफी के बाद बच जाता है इकोनॉमिक्स. कुछ मत पढ़ो इकोनॉमिक्स में से. Conceptually you will be able to handle the level of questions that will be asked. Rupee is depreciating, what will RBI do? So rupee depreciate कर रहा है, so RBI has to somehow curb that. Now rupee is depreciating, so dollar is appreciating, right? Yes or no? If rupee is depreciating, is dollar appreciating? Yes, sir. और अगर डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है तो मुझे ये बताइए, डॉलर की जितनी डिमांड है मार्केट में वो फुलफिल हो रही है? No, sir. आपके जीवन में वो लोग जो थोड़े से सक्सेसफुल हो जाते हैं उनके भाव बढ़ जाते हैं ना. दे आर लेस रीचेबल टू यू, राइट? सो यहाँ भी वही हो रहा है, डॉलर के भाव बढ़ गए, सो डॉलर इज नॉट प्रेजेंट इन द मार्केट, सो आरबीआई विल स्टार्ट डूइंग व्हाट? सेलिंग डॉलर्स. Yes, sir. है ना? तो इस तरह का आप कर लोगे हैंडल. अभी यूपीएससी का पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू हैंडल. नहीं भी पढ़ा है, फॉर स्टूडेंट्स जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएस, दे विल बी आल्सो एबल टू हैंडल सिंपल कॉन्सेप्ट, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट एंड आरबीआई. ये 3 टॉपिक का conceptual से they will ask. If you have to ask me how to do it in 2 hours, just do money and banking, government budgeting and external sector chapter from macroeconomics NCERT. That much is enough. इससे बाहर हाँ, यूपी का बजट देख लेना, डेटा, फिस्कल डेफिसिट क्या है, बजट की कितना अमाउंट था. ऑल्सो सी सम रिडिकुलस फैक्ट्स. एजुकेशन सेक्टर, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा दिया है, एंड स्कीम्स ऑफ द बजट. देयर विल बी 2 to 3 क्वेश्चंस ऑन द स्कीम ऑफ द बजट. तो वो आप रेडी रहिएगा, स्कीम्स पे सवाल आता ही आता है. ओके, नेक्स्ट लास्ट कंपोनेंट इज हिस्ट्री, विच इज स्लाइटली डिफिकल्ट इन यूपीपीसीएस. उसको कैसे हैंडल करना है? फर्स्ट, modern history. Now I'm sure most of you have worked burned the midnight oil, so is the saying, in studying spectrum, right? All of you have studied, है ना? Yes. How do we study spectrum now for UPPCS? First, chronology बस पता हो आपको year wise, वही सवाल आएगा पहली बार. You just need to know the chronology. How can you know? What is the best way to know the chronology? Index दिया हुआ है ना चैप्टर के स्टार्टिंग में. Yes, sir. आप उस इंडेक्स के आगे डेट लिखने की कोशिश कीजिए. Although that sequence you will know, but from your end, just write the date. So date and year both, or only year? By date I mean year, not the date as in solar. For some things there are historic dates, right? 8th August is a historic date, quit India. But यहाँ year से काम चल जाएगा. They have not reached that level of UPSC. 8 अगस्त को 1942 को क्या हुआ था? Again, I'm not criticizing. I have to work here. Okay. So I'm just saying the difficulty level is not that much so far. Only chronology will do. Then क्रोनोलॉजी करने के बाद बेस्ट तरीका बता दिया मैंने. इंडेक्स पे खुद ही याद करके ईयर लिखने की कोशिश कीजिए, उतने से काम हो जाएगा. या इंडेक्स ही पता हो. उसके अलावा
just do गवर्नर जनरल. I think I have taught you गवर्नर जनरल क्लास में. अभी गवर्नर जनरल से सवाल आएगा. ये एक्ट्स जो है उससे क्वेश्चन आएगा, सिंपल क्वेश्चंस which does not require that much of detail. You will be able to handle, but just एक बार वो ब्रिटिश पॉलिसीज का वो वाला चैप्टर रिवाइज कर लीजिए फ्रॉम योर नोट्स. डोंट गो स्पेक्ट्रम वाली बुक में. देन that much is fine for modern India. Rest of it you will handle. Medieval history is tricky. Now again we will go back to the book that you may think I am promoting. I hope they also think that I am promoting. So Lucent में से medieval history कर लीजिए, but focus कहाँ करना है? उन्होंने तो सब कुछ दे दिया. Like whatever is under the sun they have given. So what can we give? I mean, what can we study? Try to focus on books. Some or the other nonsensical, some or the other difficult word will be there of that era. That book will be written. Okay, so try to study कि ये किसने लिखी है किताब. आपको नाम भी सिमिलर है, मिनासु सिराज, फिर they are similar names, right? I'm sure you have also had that feeling that how do I remember it, right? और बुक के भी नाम आपको नहीं समझ आते. फवाद उल फवाद, मतलब एक फवाद को हमने भेजते भेजते इतना बड़ा सीन क्रिएट किया, राइट? करण जौहर disliked it. Yeah. So that is difficulty in the medieval names, but first focus should be on medieval books, then medieval के terms. ओके, और कुछ बैटल्स देख लीजिएगा. सो मीडिएवल के लिए योर ओनली सोर्स शुड बी, या फिर कुछ 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, इस तरह की चीजें जो लाइन में लिखी हुई है एंशिएंट में. डोंट सॉरी मीडिएवल में, लूसेंट में डोंट गो फॉर एनी अदर सोर्स. फॉर एंशिएंट भगवान मालिक, मतलब some questions are easy, some questions are you cannot prepare. Okay, art and culture does not come much. Last important source is current. So we'll give you the English version of the current, which usually comes in the Hindi version, which is difficult to read. वो part करना है आपको. Okay, so this is, anybody having any doubt in the sources? No, sir. Okay, because it's after this I'll be giving the sequence. Achha. First I have to do what to study in the next 4 days. So what to study I have covered, right? In the next 4 days. How to revise Lakshmikant for UPPSC, I have told you, you just have to take care of all the tables. Yes. Didn't do current for UP, what to do now? Okay, so didn't do current for UP के लिए we'll be giving that source. Just उसमें focus क्या करना है? हाँ, that is also important. What to focus in that current material. So first focus on Nobel Prize किसको मिला, IFA award नहीं, आईफा नहीं पूछेंगे, नेशनल अवार्ड हो कोई, फिर ये ग्रैमी अवार्ड हो, एक वो क्या मिलता है which Will Smith slapped somebody, ऑस्कर करेक्ट, यस ऑस्कर. तो ऑस्कर देख लीजिए, नेशनल अवार्ड देख लीजिए, ऑल द टेनिस चैंपियनशिप्स, स्पेशली विंबलडन इज देयर फेवरेट. तो विंबलडन किसने जीता, किसको हराया. They ask किसको हराया भी कभी कभी when they are not happy with you. Okay, Shubhangi has commented for environment. Environment I told you NCERT के 4 चैप्टर बायोलॉजी के, उसमें से भी एक चैप्टर पढ़ोगे तो भी चलेगा, पॉपुलेशन वाला, nothing more. Okay, so awards में ये देख लीजिए. फिर बुक्स नई किसी ने लिखी होगी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, मतलब नई किताब, वो तो प्लेजरिज्म. I mean, in saying so just see awards, books, then उसके बाद some important central and UP के schemes, third component को देखिए. चौथा फिर कुछ ऐसा फर्स्ट हुआ हो, फर्स्ट दिस, फर्स्ट दैट, फर्स्ट ये, फर्स्ट वो, that part you just see from that book. पढ़िए आप सारा, लेकिन इन पे फोकस कीजिए. रिवाइज करते समय इन्हीं को देखिएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा. I'm just saying study all of them. Then अच्छा, एक और काम कर लेना, यूपी के लिए एक फेवरेट उनका डोमेन है, दे आस्क अबाउट वेरियस इंस्टीट्यूट्स कि इंस्टीट्यूट, दिस इंस्टीट्यूट इज वेयर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है,
तो दैट पार्ट यू कैन सी. ओके, ऑल्दो देखने के कौन बाद से भी टाइप के इंस्टीट्यूट से? एक तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट देखना, सिल्क बोर्ड, टी बोर्ड, वेटनरी इंस्टीट्यूट, एक एक इस तरह का होगा. ओके, तो पहला तो इस पे ध्यान दीजिएगा. ट्राई टू सी इंस्टीट्यूट्स विच आर इन यूपी. ओके, दैट इज इन करंट, दैट यू हैव टू फोकस. बाकी नोबेल प्राइज जरूर देखना, पीस प्राइज, मेडिसिन प्राइज, ये वो वगैरह वगैरह. देन एक देयर फेवरेट एरिया इज आस्किंग, कोई WHO का कोई नया अपॉइंट हुआ हो या फिर WTO का डायरेक्टर जनरल हुआ हो. सो दैट पार्ट दे आस्क विद वेरी डिफिकल्ट नेम्स, सो जस्ट सी दैट कि वो आपको करंट में मिल जाएगा. डोंट वरी, दे मेक मटेरियल लाइक दैट ओनली. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट करंट कैन बी डन इन 1.5 days. Okay, now how do I structure the next 4 days? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tomorrow you should start with Lucent because science is my most science and current are my first priorities. So I'm starting with Lucent biology. I'm just recommending my strategy. Lucent biology से start किया. I'll try to finish biology and chemistry. Physics थोड़ा सा बड़ा है. Biology and chemistry के साथ next day I'll be doing chemistry and I'll be starting with current. So current that day, Wednesday, then Thursday also current will continue. Physics part will be gone. So you can add environment to that along with current. Thursday you are just studying current. Friday you are studying Lakshmikant ke tables. Okay. Saturday you can just chill, revise anything. If your center is fine, I mean nearby, you're not traveling, well and good. You have an extra day to revise these things. You can revise, otherwise just travel and enjoy. No need to worry kaisa hoga. So sequence, Tuesday we are starting with Lucent ka biology, matlab I'm not teaching you, I'm just telling you. Lucent biology, then try to do chemistry. I know it is difficult, it is some things which will go out of your head. जो बहुत ऊपर से जा रहा होगा उसकी टेंशन मत लेना. अब प्लांट किंगडम समझने मत बैठ जाइएगा, लेकिन हाँ, जिबरलिंस क्या होता है, ऑक्सरेलिंस, ऐसे टर्म लिखे हो तो एक बार देख लेना कि जो टर्म एक बार आपको देखने में समझ आ जाए, ट्राई टू सी दैट. अदरवाइज प्लांट किंगडम, आर्थ्रोपोडा ऐसा लिखा हुआ है भाई, एक बार में वर्ड बोला ना जाए वो कहाँ से हो, तो उसकी टेंशन नहीं. ओके, जनरली बायोलॉजी में देयर आर सम फेवरेट एरियाज. इफ यू आस्क, दे विल आस्क अबाउट डिजीज, पूछेंगे ही पूछेंगे, स्पेशली मच्छर से होगा कि नहीं होगा, इस तरह की डिजीज. दे विल आस्क अबाउट विटामिन्स, उनकी डेफिशिएंसी वगैरह वो पूछेंगे. ब्रेन का फंक्शन, ब्लड, दे विल बी आस्किंग समथिंग रिलेटेड टू दिस. तो ये पार्ट आएंगे तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इन पे. ओके, देन नेक्स्ट डे वेडनेसडे यू आर स्टडिंग physics and you have started with the current material. Current you will give due time, थोड़ा सा time लगेगा, it is a bulky thing. Don't be overwhelmed by it. Try to just search whatever I have said. Peace Prize, I mean Nobel Prize. Try to see other awards. जैसे Olympic, there will be a question on Olympics. Okay, कितना मेडल मिला ये भी पूछ सकते हैं. टेंशन मत लेना बिल्कुल कि ब्रॉन्ज मेडल कितना था, टोटल टैली कितना था, इंडिया वाज एट विच प्लेस. सो प्लीज फोकस ऑन दोस थिंग्स. they can very much ask इंडिया किस प्लेस में था. ओके, इंडिया के ऊपर कौन था, नीचे कौन था. सो कांट से एनीथिंग. मतलब अब जब पता है कि यहीं से पूछेंगे तो डिटेल में देखिए ना उसको. सो अवार्ड्स, बुक्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंस्टीट्यूट्स, see these things in current affairs. Okay, then next day, that is Friday, you are studying. नहीं, Friday नहीं, medieval history रह गया ना. We have not scheduled medieval history, right? So medieval history you can tag next day along with your current affairs instead of environment. Environment को आप schedule कर लीजिए on Saturday because it is very light reading, it is not at all a pressure on you. Medieval you can study along with current on Thursday. Friday you see all the tables of Lakshmikant. Saturday environment को देखिए. Last question is CSAT going to be a problem in UPPCS? No, it is not going to be. But सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा. आई मीन सारे मतलब सारे क्वेश्चन देख के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस विल बी स्लाइटली सिंपलर. यूपीएससी की तरह नहीं होंगे, आंसर्स निकल जाएंगे. आंसर ऑप्शन से क्वेश्चन को निकाल लेना इतना टाइम होगा. हिंदी के क्वेश्चन होंगे, तत्सम तद्भव ये पता हो, क्रिया ये वगैरह एक बार अगर देख सको,
if you have any Hindi book, so because there will be 10 questions, और वो पूछेंगे इस word का तत्सम और तद्भव क्या है. Okay, so that is free thing. I mean, CSAT will not be a problem for any of you. So far I have not heard anybody who has failed CSAT in UPPCS. Questions are very simple. 10 questions are from Hindi. Passages are very simple. एक वीडियो शेयर करेंगे हम आपके साथ. Just watch it 1 hour. I would recommend you can watch it even before 1 hour, 2 hours before giving the paper. That video will be about questions on communication, संप्रेषण, है ना, कि दो लोगों के बीच में communication के barrier क्या है. For example, between you and me there is a physical barrier, maybe noise, fan का noise, right, mobile का noise, है ना. So we'll give you a 1 hour video. उस वीडियो को देखने के बाद most of the things you will be able to handle. If you have any CSAT का book which talks about communication, वहां से आप देख लो, वो देख लोगे तो कम से कम 30 to 35 questions, 30 questions will be from communication. कि forward communication क्या होता है, backward communication क्या होता है, which of these is the ideal form of communication. फिर उसके बाद hypothesis क्या होता है, what is fallacy of petitio principii. एक बार देखना है. ये सब दिखने में आसान लग रहा है. Maybe when you see it for the first time in the paper, for you it will be difficult, but it is very very simple. कोई concept नहीं है, कोई कुछ भी नहीं. So that video we will share. I'll share with you. You can watch it. I will recommend to watch it just before, क्योंकि उल्टी करनी है वहाँ पे second paper में उस वीडियो को. And एक बार देख लेना कि what are the various fallacies in communication. Petitio principii क्या होता है. तो circular argument को कहते हैं petitio principii. Like God exists. Vedas बोलते हैं ना God exists. Yes or no? Yes, But Vedas are the words of God. So is there a circular reasoning? Yes. But it is not so. Why? Can anybody defend God? Why is there no circular reasoning? This was given by the great Adi Shankaracharya. Because God gave it. Because God gave us. So that is appealing to authority, not a very good argument, right? Yes. Law for its majesty and God for its divinity should not be an argument in logic, right? Yeah, that's right. Kant, Immanuel Kant's statement. See, then Shankaracharya says a very simple thing. Is there a difference between you exist and you know? Does existence come before knowing or does existence come after knowing? पहले तो पैदा हो गए ना, जानने से पहले. After, yes. So at the level of existence, God comes first. At the level of knowledge, Vedas come first. दोनों के बीच में लड़ाई ही नहीं. Anyways, so that is all from my end on this session. If you have any doubts, you can ask. Sir, environment के वो biology के last 4 chapters करने हैं ना, NCERT के. Correct. So far they have not asked biotechnology. देख लो एक बार blue BT, green BT क्या होता है, because they are inspired by UPSC. UPSC के 2020 और 2021 और 2022 इसके question कर लेना है. 2-3 question यहाँ से आएंगे. Just see the solution of 2020, 2021 and 2022. So UPPSC में previous year questions भी repeat होते हैं क्या? पहले होता था. एक आध हो जाएगा. Not a very beneficial strategy. People used to keep solving those 40 साल के वो कोई घटना चक्र की या किसी की एक बुक आती थी 40 solved papers on science, and not a beneficial strategy. Yes. So यूपी के बजट के लिए कोई मतलब समरी या टाइप या फिर डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाके उनका बजट ही समरी है. देखो उनका बजट ही समरी. Just see it. Okay. See their website. Okay. So tomorrow we'll take this session on UPSC questions. अभी तक आपने जो वीडियोस देखी हैं YouTube पे इंस्टीट्यूट्स में, तो 1 का B है, 2 का C है. I have researched this part and the answer is this. We'll see how we could have done
without all this shenanigans? कैसे कर सकते थे? क्या logic था? Could we have done this paper and cleared and got 60 questions correct? Is there a method to this madness or not? Those parts we'll see tomorrow. Okay. Thank you for your time and patience. Thank you, sir. sir. Okay. Bye. Bye, sir.